Welcome back. Let's get you some more of the state-related news. Early this morning, vigilance authorities raided 14 officials of the Tamil Nadu Public Service Commission. The raids included residence of joint secretaries and undersecretaries in the commission. The Directorate of Vigilance and Anti-Corruption had earlier raided the commission's chairman and members following allegations of corruption in recruitment. A case was subsequently filed against them. சோதனை ஆரம்பிச்சீங்க அது காலை 7 மணியிலிருந்து இப்போ 12 மணி வரை. இப்போ வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஆதாரங்கள் எல்லாம் கிடைச்சிருக்குதா? ஆவணங்கள் எந்த மாதிரி இருக்கு? ஆவணங்கள் கைப்பற்றிட்டு விசாரணைக்கு விடுது. The Tamil Nadu Public Service Commission was brought under the purview of Directorate of Vigilance and Anti-Corruption in August. Immediately, the commission was raided last month. The second leg of the raid was conducted today. Many documents were seized, including bank passbooks. Sources said more inquiries is on the anvil. In Chennai, with camera person Madan, this is Anand for NDTV Hindu. The Tamil Nadu Congress unit today asserted that the UPA government was not sanctioning more funds to the states than the previous NDA regime, and that it was not adopting a stepmotherly treatment as alleged to non-Congress ruled states. The TNCC chief, Mr. Jnanadesigan, said that there was no truth in Jayalalitha's allegations that the centre was adopting one yardstick for states. In fact, he added that the centre treats all states on par, and it was the duty of state governments to use central funds effectively and efficiently. Amma had earlier charged the centre with meting out stepmotherly treatment to such non-Congress ruled states and neglecting them. But for now, Ms. Sonia Gandhi has assured Mr. Jnanadesigan the AICC's full support in the issue. Some sigh of relief. The bookings for Tatkal tickets for a train journey has been brought down from 2 days to 1. Now, this will be effective from the 21st of November. The Indian Railways has brought about this change to prevent the misuse of the Tatkal scheme by agents and unscrupulous elements. According to the new rules, every person can book tickets for a maximum of 4 passengers per ticket per day. Earlier, every person could book tickets for 6 passengers per ticket. Now, it is now mandatory to enclose a photocopy of the ID card of one of the passengers while booking tickets. For online booking, there will be a separate field to key in the number of the ID card. And finally, agents and web service agents will be allowed to book Tatkal tickets only between 8 and 10 in the morning. In some national news now, allegations that have stunned cricket lovers in India. Former Indian cricketer Vinod Kambli has alleged that the historic 1996 World Cup semi-final between India and Sri Lanka was fixed. In fact, according to Kambli, Mohammad Azharuddin's decision to field first, even though the batting was the first norm after winning the toss, was suspicious. Remember, India were left struggling at 120 for 8 on a poor pitch chasing Sri Lanka's 252. Kambli, who was not out till the end, was also seen crying that day. Speaking on a television show, Kambli said that the match had in fact finished his career. Azharuddin has, however, rubbished the claims and questioned Kambli's motives behind the allegations. While Mohammad Azharuddin, who was captain of the Indian team during the 1996 World Cup, has reacted sharply to Vinod Kambli's claims, saying Kambli has shown his class and he should be thankful he got to play as much as he did. पहली बात तो एक कहना चाहूँगा कि जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने बिल्कुल सरासर गलत है और जिन्होंने जैसा कि रो के कह रहे हैं जो स्टेटमेंट दे रहे हैं मैं समझता हूँ कि बहुत घटिया और थर्ड क्लास स्टेटमेंट है और रोए तब भी थे वो रोए तब भी थे नहीं वही पता नहीं क्यों रो रहे हैं मुझे मालूम नहीं आज तक बट लेकिन जो 96 का जब हुआ था तो ये मैंने कई बार बोल चुका हूँ जब मैच भी जब ख़त्म हुआ था उसके बाद में भी हमने कहा था कि ये पूरा टीम डिसीजन था कि हम लोग फील्डिंग करने का आपने जैसे देखा है कि दूसरे प्लेयर्स भी खुद कह रहे हैं कि ये टीम डिसीजन था बट कोच भी कह रहे हैं लेकिन मैं समझता हूँ जब टीम मीटिंग हो रही थी शायद कामली सो रहे थे वो बिल्कुल खुश होना चाहिए कि इतने ज़्यादा वो क्रिकेट खेल चुके हैं ये 3 या 4 साल जितने भी खेले उनके जो कैरेक्टर है सब पूरे प्लेयर्स को पता था और मुझे भी पता था और जितना भी वो क्रिकेट करे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए आज मैं कभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट लेकिन जिन्होंने जितनी घटिया हरकत की है इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए नहीं तो उनको कई बार टूर पे से वापस भेजा रहता है हर बार आपको पता है उसके कैरेक्टर कैसा था और क्या करते थे और कैसे खेलते थे और इसी गायब हो जाते थे स्केपगोट
स्केपगोट जो बोल रहे हैं बिल्कुल थर्ड क्लास स्टेटमेंट है स्केपगोट, ये खुद अपने गुनाहों की वजह से टीम में से ड्रॉप हो गए। Well, Sanjay Manjrekar, who was also part of the Indian World Cup squad in 1996, doesn't seem to agree with Vinod Kambli. In fact, he tweeted, 1996 World Cup semi-final, the decision to field first may have turned out to be a wrong decision, but it was an honest cricketing decision. Up ahead on the bulletin, khaki is his on-screen colour, and the film buff salutes this actor even as he hits his half-century in the industry. வழங்குகிறோம் யுவர் பேபி கேன் ரீட். விளையாட்டு பருவத்திலே ஆங்கிலத்தை அடிப்படையிலிருந்து கற்றுத் தருகிறோம். யுவர் பேபி கேன் ரீட் மூலமாக உங்கள் குழந்தை வார்த்தைகளை பார்க்கும் அதே நேரத்தில் கேட்கவும் செய்யும். வார்த்தைகளை கேட்டு பிறகு அதன் அர்த்தத்தையும் பார்க்கும். அந்த வார்த்தைகளின்படி செய்து காட்டும் அல்லது திரும்பச் சொல்லும். ஒவ்வொரு நொடியும் மூளை பல்லாயிரக்கணக்கான தொடர்புகளை உற்பத்தி செய்து கொண்டே இருக்கும். யுவர் பேபி கேன் ரீட் வீடியோவை பார்க்கும் பொழுது அந்த தொடர்புகள் இன்னும் வலுப்பெற்று உங்கள் குழந்தைகள் நன்றாக கற்கவும் பேசவும் தொடங்கிவிடுகின்றன. தற்போது குழந்தையை LKGயில் சேர்க்கும் போதே நேர்காணல் நடைபெறும் காலத்தில் உங்கள் குழந்தைகள் அந்த ஆசிரியர்களையே வியப்படையப்படும்படி செய்கிறது. மேலும் விவரங்கள் அறிய பேபின்னு டைப் செஞ்சு 56677 எண்ணிற்கு SMS அனுப்புங்க. Culinary journey of a lifetime from the comfort of your couch. Only on Enter the Kitchen.